So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are in the Wednesday session. And the agenda for today is in continuation with the series on Buddha's teaching. So today we are going to discuss the 3 steps to Nirvana. Yes, so Buddha's teaching is all about Nirvana. So we will see what are the 3 steps laid down by the Buddhism, the teachings, and which Gautam Buddha practiced and preached to people, and that is what he wanted them to follow. So we're going to discuss on that. Yes. So anybody who wants to share something on what has opened up in their life based on the 2 sessions that we have done so far. Suffering, dukh nivritti, and wisdom. So how we are going to, what we have learned from these sessions and what are we taking into our life. Anybody who wants to share? Anirudh ji, Harshvardha ji, Amit ji, welcome. Yes. कौन बोलना चाहेंगे? I hope today there is no festival as such. People should be joining in here. आज लगता है सब festive occasion में busy हैं कहीं पे. Anyway, so what we will do is, in that case, we will start with the basic teachings of Buddha. So as we know, Buddha started his journey by looking at the perfect way to solve the suffering and misery of the mankind. And he came to the conclusion that suffering is because of the ignorance, and if ignorance is the problem, the solution is wisdom. So he preached and he followed and he practiced the path of Gyan, wisdom. And he said, if you want to achieve the highest level, which is Nirvana, then Gyan or wisdom is the only solution. Right? So if wisdom or Gyan, that is the ultimate solution, what is the steps that will take you there? So his preaching was, if Gyan is what you need to achieve, then the only path that is available for you is Dhyan. जिस पे दोगे ध्यान, वो देगा ज्ञान. So that was his thought process. So he said, if you want ultimate knowledge of the ultimate truth, wisdom of the ultimate truth, then Dhyan is the only path to it. And Dhyan is meditation, strict mental discipline, correct? So you have to keep on meditating. And in fact, if any of you have practiced Vipassana, then you know, in Vipassana, we do meditation for more than 15 hours a day. So it's only meditation and meditation and meditation. That's all, right? So ध्यान, तो ध्यान किस पे देना है? ध्यान अपने ऊपर ध्यान दें. तो बाहर की पूरी attention को छोड़ के, that means you are cut out from the world. So even in Vipassana 10 days, you are supposed to keep quiet. आप मौन धारण करते हो और सिर्फ अपने अंदर अपने विकारों को आप देख रहे हो, करेक्ट? और देखना है और छोड़ना है. So that is the path of strict mental discipline or meditation, which actually is the stepping stone to samadhi, correct? So when in Vipassana we say samadhi, we are actually talking of the dhyan, the meditation. And if he says, if meditation is not happening, ज्ञान के लिए meditation चाहिए, अगर meditation नहीं हो रहा है, then you have to come back one step and see what is your lifestyle. So that in the technical language, he called that shilachar. So shilachar, or the lifestyle, you can consider that as a moral or ethical conduct of living. So every human being has a conduct. We conduct ourselves. So the moral and ethical way of conducting yourself, that was laid down by Buddha. So Gautam Buddha said, these are the 3 steps for the ultimate realization to happen. So if you go stepwise from the first to the third, the first one is the moral or ethical conduct. And technical word for that he used is shilachar. So shil is a moral or ethical conduct. You can translate it that way. Second is strict mental discipline, which is meditation, leading to samadhi. So meditation and meditation and meditation and leading to samadhi.
And what will that meditation give you? It will give you pragya. Pragya means knowledge. So as you keep on receiving pragya, the ultimate truth will dawn on you, and you will reach the state of highest truth, wisdom of the highest truth, which is nirvana. So that is what the teaching of Buddha actually says. Correct? So these are the 3 steps which are outlined. We will definitely go into the details of these 3 steps. And today we are going to discuss on the first step, which is शील, because that is the primary, that is the most fundamental. क्योंकि अगर शीलाचार जो है वो अगर हमने पूरी तरह से अपने लाइफ में नहीं लाए तो ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान नहीं लगेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा. So that was the process of Buddhism, right? So we will discuss on the basic concept of Shilachar today. Yes, but having understood the 3 steps, anybody who wants to share anything, your views, so you are free to do that, and then we will take on the discussion further. And if you have read about the basic prayer of Buddhism, if anybody remembers it, what is that? Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. So there are 3 pillars of Buddha's teaching that he says. So I am going to the refuge, or I am surrendering to myself. उनकी शरण में जा रहा हूँ. किसकी शरण में जा रहा हूँ? So first step is Buddham Sharanam Gacchami. I surrender to the enlightened self in me, the wisdom. जो मेरे अंदर wisdom है, मैं उसको surrender कर रहा हूँ. तो Buddham Sharanam Gacchami, right? And Dhammam Sharanam Gacchami, which means the path of dharma. I surrender and devote myself to the path of dharma. And dharma in Buddhism means to basically follow the path of meditation, ध्यान and pragya. तो ध्यान में रहना है, अपने विकारों को देखना है, छोड़ते जाना है, and उससे जो प्रज्ञा जगेगी, that is called the path of dharma. Yes. And third is Sangham Sharanam Gacchami, the company of the truth. It actually doesn't mean that you dance and pray, but what it means is you are in the company of the truth. So like-minded people. So you have a satsang. We talk of satsang. So that is what is known as Sangham. So Sangham means basically you are established in the truth and you are in the company of the truth. So satsang ki baat kare. So these are the 3 paths, not paths rather. These are the 3, you can say, methods by which you reach the nirvana. So Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. So this all of you must have listened many times as a prayer. So that is what actually the Buddhism is. Okay, so somebody share what is opening up. Meanwhile, let me welcome the guests. So Venkatji, welcome. Maniji, welcome. So Venkatji, if you're coming here for the first time, if you want to introduce yourself, you can do that. Anything that you want to share? We are talking of the 3 steps to nirvana, and we will dwell on that, and also focus on the path established by the Vipassana meditation, which is very, very closely associated with the Buddhism, right? Yes, anybody who wants to share? Otherwise, it is looking like a monologue right now. Anybody wants to share anything that is opening up? Any questions that you want to ask? Okay, so we move further in that case. So the 3 steps, let's outline that. We talk of Shilachar, moral and the ethical conduct. So how many of you think this is very, very essential? And what is the moral and ethical conduct? Because see, now we are going to stop following the Buddhism teachings, and now we are going to look at practically what is possible for us, right? तो अगर आपके लाइफ में moral ethical conduct है तो किस लेवल पे है? और जो लॉर्ड बुद्धा ने टीचिंग्स बताई थी उसमें पंचशील मार्ग, शील का जो है पंचशील, there are 5 aspects of the Shilachar that he taught, and he said that is the basic. Whether you live as a monk or whether you live as a grahast, he says you can stay in the family and do that, but these 5 steps are essential. So he mentioned that as 5 steps. We will review those 5 steps, and we will also consider what in the Patanjali Yoga Sutra we have talked about yam and niyam. So they are 10 steps, right?
So we can consider that also as an extrapolation of what Buddha's teaching tells us. But right now, first let us look at what are the 5 steps of the Shila chart. Yes. But before that, anybody wants to share anything? What is your conduct? How are you conducting yourself in your life? कौन से aspects हैं आपके जो which you think will help you in your meditation? And let me put it this way, when you are talking of moral and ethical conduct, we are talking of obviously sattvic lifestyle. Sattvic, everybody knows, the purest and the highest vibration of the conduct. So it is the kind of a right conduct or the highest conduct a human being can follow. Right? So that is what we are talking of when we talk of Shila chart. So what will be the aspects of highest conduct or the right conduct for a human being? That is the first step, because that will set the foundation for the journey in meditation. And the highest level of journey in meditation will lead to samadhi and to the wisdom and the nirvana. That is a teaching of Buddhism, correct? So let us first look at the Shila chart. So what do you think are the steps which are very, very important for the right conduct for a human being? So Anirudhji, if you're there, if you want to share something, please go ahead. I think rest of the people are on a silent mode. Sir, I will listen, sir. The ethical conduct, everybody knows the ethical conduct. I feel so. Okay, that's fine. So since most of us are aware of what is meant by the moral and ethical conduct, so let us see what Buddha has laid out as the 5 Panchsheel mark. Right? They may not be knowing what Buddha have said, but that is a different issue. Yeah, but that is a topic today, right? So I will to speak on that. Yes. So the five Panchsheel mark, that 5 aspects of the conduct or a right conduct for a human being, which Lord Buddha established. So we will look at that, and it is very closely related to the yam, okay, of the Patanjali Yoga Sutra. So the first one he says is ahimsa, non-violence. Rather, he specifies that as no jeev hatya. Jeev hatya ke bilkul khilaf the. So his preaching started with, you are not supposed to kill anybody. Everybody has a right to live on this planet Earth. So jeev hatya is something which is prohibited. You cannot do that. So we can consider that equivalent to ahimsa, right? It is not about only killing. It is any kind of violence, whether it is in thought or words or action. So that will be included in ahimsa. So that was the first step, ahimsa, right? Then he talked of truth. Now, truth doesn't mean just honesty. Truth means your whole life is based on you following the truth. Satya ki khoj mein. So your whole life is based on the truth, eternal truth. So you find out the eternal truth and then you follow that as a lifestyle. Correct? So truth. So obviously it includes किसी से कोई धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है ना? So all these things are included in that. So we all know this. So we can consider that as the second step. Okay, so second step means within the Panchsheel mark, the second point that he raised was Satya. So not to speak any truth, not to do any kind of cheating or fraud or any kind of deceit. So all that is included in the path of truth. Welcome, Simiji. Right, so we're talking of Buddha's teaching and we are talking of the first step, which is Shilachar, right conduct for a human being. And Buddha said the first one is ahimsa, that means no jeev hatya, and the second one is truth. Follow in fact, invoke the truth in you and truth in your life. That is what he meant, right? So live a life which will be an embodiment of the satya, truth. So that is the second point. Third, he said, was very closely it is related to brahmacharya. Brahmacharya means basically a life of celibacy, or in a married life, it is being faithful to your partner. So if you're married and if you're living in a grahas jivan, then you will be committed to your wife. So no sexual promiscuity, you can say that. So that is what he preached. So brahmacharya mein, you can consider that as a
no misdemeanor in the sexual activities of your life. So that was the third point here said. So this also is very clear, which is closely related to the brahmacharya part of the yama that is described in the Patanjali Yoga Sutra, right? Fourth, he said, is no stealing. You will not, either in thought or in words or in action, you will not do anything to snatch anything from others which is not rightfully yours. तो जो आपका नहीं है उसकी तरफ आप कोई आकर्षण नहीं रखोगे, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, या जो मर्जी हो. So no stealing, which is also related to what we see in the 5 steps of yam, which is asteya. We call that asteya, yeah, non-stealing. And the fifth, which was specified by Buddha, which is actually different from, you can say, the yam, which is non-intoxication. Any kind of intoxication, he says, that will be a delusion, that will be a deviation, and that will not allow you to progress on the spiritual journey. So any kind of intoxication, he was strictly against that. So we can all know all kind of intoxication that we have. I would say, I would generalize it more by saying no addiction. So if you're using anything, somebody can be addicted to even mobiles right now. So you can be addicted to mobile, you can be addicted to tea, you can be addicted to coffee. So even that would be considered as an intoxication, correct? So it need not necessarily means drugs or alcohol or cigarettes that we know. It could even mean any kind of very strong attachment to any kind of addiction. So that will be considered as an intoxication, correct? So we can definitely discuss on these points. So we will, but these are basically the 5 points that he raised. And of course, we can consider the 6th point of yam also in it, which is what? Non-possession. You will possess only what is needed by you. जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको कम करते जाओ, और जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखनी है, बाकी आप जो हैं उसको लेट गो करेंगे या फिर उसको चैरिटी में देंगे, डोनेट करेंगे, जो भी करेंगे, so that you can share that with the people, correct? So that also we can consider that as a part of the good conduct. So we can consider all this, which is a combination of, you can say, the Buddhist teaching as well as the 5 steps of yam that we have learned from the Patanjali Yoga Sutra, correct? So this is in short the teachings of Buddhism in the terms of Shilachar, or the right moral ethical conduct. Now, anybody who wants to discuss anything on this is welcome. And the fundamental understanding is that unless your moral and ethical conduct is right up there, it will help you to move on the path of dhyan and samadhi, which means you will be able to follow a strict mental discipline by sattvic lifestyle, and that will help you in your spiritual journey. और अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ध्यान से मिलेगा ज्ञान, and ज्ञान उसी process में रहेंगे तो with divine grace and blessings we will achieve that state of self-realization. That is our understanding. Buddha didn't believe in that. Buddha simply said the wisdom will take you to nirvana, nothingness. Yes? So that is the teaching. Yes, Simiji. Anything you want to ask? Anything you want to share? What about eating non-vegetarian, egg? Where does this come? Yeah, so understand this, when we talk of sattvic, when we are talking of non-veg food, जीव हत्या के अगेंस्ट है, तो नॉन-वेज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एज पर द बुद्धिस्ट टीचिंग, क्योंकि जीव हत्या के खिलाफ है, तो आप जीव को मार के खा नहीं सकते, मारना ही अलाउड नहीं है, तो मार के खाना तो अलग बात है. सो इट विल बी, वैसे भी उसको अगर हम देखें तो एनर्जी लेवल पे वो तामसिक में आता है. Okay. Correct? And even if you are eating any spicy and masaledar khana, so that will come in Rajasic. So he is strictly against Tamasic and Rajasic. It has to be a sattvic one, which will actually keep your intensity of desires low, right? So that is what is taught in Buddhism. So sattvic lifestyle means obviously you are free, you have to be free from the tamasic and the
तामसिक के अंदर राजसिक नेचर। तो आपने जब भी बोला नॉनवेज फूड, वो तामसिक नेचर है, ऑब्वियसली नॉट अलाउड। But that is what Buddha taught. If you talk of moderation, if you are very much, if you have a preference for non-veg, you have to slowly bring it down. Moderation, at least addiction नहीं होना चाहिए, which means अगर non-veg नहीं मिला तो आप मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. So slowly you bring down your addiction to it, your dependency on it, and slowly you will be, as you progress on the spiritual journey, you will be able to give it up. Ultimately, sattvic lifestyle is what we want because Sattva is the highest frequency of consciousness available for you. तो तामसिक और राजसिक से बाहर निकलना है और सात्वा में या सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाना. That is when your spiritual journey will get the booster dose. So that understanding is very clear. That is taught in all the scriptures and all the you can say in all the basic teachings. It is a must. But if you can't give it up right now, no need to panic. Just bring it under moderation and slowly try to overcome the addiction. Addiction तो नहीं होना There's चाहिए. no addiction as such. Actually, there's no addiction as such. वैसे भी we eat once in a month or twice a month. तो वो धीरे धीरे आप कम कर सकते हो, और नहीं भी कर सकते हो तो understand that will be it's like a speed breaker. So your speed will become slow. तो आप 100 की स्पीड पे नहीं जा सकते, आपको 40 की स्पीड पे आना पड़ेगा, एंड देन फिर धीरे से फिर बढ़ाना पड़ेगा 100 की स्पीड पे. So obviously it will retard your spiritual journey. You can consider it that way. But don't go into the morality part of right and wrong, good and bad कि भाई पाप चढ़ेगा, नहीं, पाप की बात नहीं कर रहे हैं. It will hinder your spiritual journey. Simple. So intoxicants and non-veg food and whatever you can think of, any kind of addictions, that will hamper your spiritual journey. It will slow you down, or rather pull you down. Slow you down भी नहीं, it will pull you down. So you have to again go up. दोबारा कोशिश करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा. तो जितनी जल्दी हो सके. Even toxic thoughts. Obviously, thoughts, words, and actions. तामसिक तो कुछ भी नहीं चलेगा, है ना. तो वायलेंस नहीं होना चाहिए थॉट्स में. तामसिक नेचर, दुख नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी इन ए विक्टिम ईगो. वहाँ अपने आप को आप हिंसा कर रहे हो, वो नहीं चलेगा. if you are always crying and cribbing and blaming, तो तामसिक और राजसिक इमोशंस हो गए, वो नहीं चलेंगे. You have to live your lifestyle with only sattvic qualities of thoughts, sattvic quality of words, communication, and as well as your actions. That is a lifestyle which will propel your spiritual journey. Yes? So anything else that you want to ask? Are the 5 steps clear? Intoxication पे ज़्यादा बात कर रहे हैं हम लोग, but the 5 steps should be clear. अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, नॉन एक्यूमुलेशन भी जोड़ देते हैं उसी के साथ, अपरिग्रह, and no intoxication. So these are the basic teachings of Buddhism. This will give you the right conduct. This is the foundation. ये foundation अगर बन जाती है, then you can proceed faster on the second step, which is meditation. Meditation नहीं हो रहा, तो don't struggle there. Come back and see which 5 steps are missing. Which of these 5 steps are missing? That's what he said. इन 5 steps को strong बनाओ, meditation आपका आराम से होगा. अगर नहीं हो रहा है तो इन 5 में कुछ मिसिंग है, चेक करो क्या है, उसको ठीक करो. That is the teaching. Yes? And meditation करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए. At some point of time, you will get enough wisdom of the truth, and that will take you to Nirvana. And you have to look inside, not outside. क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है. बाहर सिर्फ दुख है, और दुख का कारण आपके अंदर है. That is how he understood it. So he said, no point looking at the outside world. Look inside. The reason is inside you. Remove that with ध्यान. ध्यान ऐसा करो कि आप अपने विकारों को देख सको और उसको छोड़ सको. वो ही धर्म का मार्ग. That is what he taught. Dhammam sharanam gacchami. That's what it means. You look at your flaws, look at your vikars, and leave it. अपने आप को खाली करते जाओ. Nothingness में आना है, तो खाली करते जाओ. जो भी दिख रहा है अपने अंदर, वो खाली करते जाओ. क्योंकि one thing he said was, the whole universe is changing,
and if it is changing, you have to let it go. जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ते जाओ. जब पूरे खाली हो जाओगे, then you will attain nirvana. That is his teaching, right? तो जो कुछ भी दिख रहा है, शरीर दिख रहा है तो शरीर के परे हो आप. Leave the attachment to the body. Leave the attachment to the senses. Leave the attachment to the outside world. Leave the attachment to your thoughts, your emotion, your feelings, your vikars. They're coming and going. So keep giving it up. And at one point of time, you will be completely empty and you will reach nothingness. That is what the teaching is. That is Nirvana. Yes? So let's have some sharing. Welcome, Mani ji. Welcome, Geeta ji. Yes. कौन बोलना चाहेंगे? ज्ञान इतना ही है आज का. सर लॉ ऑफ कर्मा और ये बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है? Law of karma में कोई फर्क नहीं है. Law of karma is exactly the same that we understand. Buddha also teaches the same. In fact, that is the foundation. Very good point that you have raised. In fact, law of karma or karma is the basic foundation of everything that is happening in your life. That is what Buddha also said. कि जो कुछ आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, it is all because of the karma that you have done before, right? So that is coming to you as a in past life. Past lives में आप जो जो करते हुए आए हो, उसी का रिजल्ट आ रहा है आपके सामने. So though Buddhism doesn't talk of the presence of Atma or God, but it does acknowledge the power of karma. There is only one thing that it follows. You are taking birth after birth after birth because of the karma. और वो कर्मा कहाँ है? आपके अंदर है, आपके चित्त में है, विकारों की तरफ. तो उन विकारों को जैसे जैसे छोड़ते जाओगे, you will be free from the karma. That is what he said. Yes. Okay. So that is wrong. But he talks of the inside karma. चित्त में जो है, करेक्ट. और जो कुछ आ रहा है बाहर उसको आने दो. And his whole teaching is all about your cleansing your inside world, cleansing your chit, which is very, very powerful and which is profound, because that is actually the spiritual journey that we are in. जो चित्त को साफ नहीं कर सकता, that is not good enough. That is why he was against the rituals. That is why he was against the scriptures. कहते wisdom scriptures पढ़ के नहीं आएगी. And the whole पंडितों की पूरी कम्युनिटी उसके खिलाफ हो गई, पुराणों को और स्क्रिप्चर्स को बेकार बोल रहे. He said it is not going to give you any wisdom. It will give you knowledge. That is not good enough. You have to sit in meditation. अपने अनुभव से जो wisdom आएगी वो आपको निर्वाणा की तरफ लेके जाए. That is the path. And then the whole community was always talking of, go on meditation. शरीर को पूरा सुखा दो, शरीर में कुछ नहीं रखा. And he was nearly dead. He followed that. He did all the experiments. His conclusion is always coming from Mani says. Okay. So thank you. So basically, what he was saying is that scriptures and all will only give you knowledge. It is not going to cleanse your chit. And if it cleanses your chit, then it is a good job. So he has given many examples for that. And he always said कि scriptures पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पूजा rituals करने से कुछ नहीं होगा, आपका चित्त साफ होना चाहिए. वो हो रहा है, then you are on a path. And that will happen only. And he of course he taught meditation. So he said वो सिर्फ ध्यान से होगा और किसी से तो हो ही नहीं सकता. The fire of wisdom is going to burn your karmas. अपने कर्मों को जलाना है, चित्त में जो विकार है उनको जलाना है, तो वो ज्ञान के आग से ही होगा. So you have to kindle the fire of the wisdom. That is going to burn up all your impurities, and then you will be free. You will be free means then you attain nirvana. So यही सत्य का मार्ग. So that is what he practiced and that is what he taught. But he followed it. Absolutely. पहले एक्सपेरिमेंट किया, अनुभव किया, जो अनुभव में था वो सिखाया. कोई किताबों की पढ़ी बातें नहीं सिखाई. He simply said that they are useless. And hangama. So that was the basic understand. And fasting. He said कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं, शरीर को सही रखो. तो फल खाते थे, खीर खाते थे, मेडिटेशन करके आते थे, फल खीर खाते थे, नहा धो के फिर दोबारा मेडिटेशन में बैठ जाते.
Correct. So he understood that preserving self-preservation or preservation of the body is important for your spiritual journey. शरीर ही खत्म कर दोगे तो spiritual journey खत्म हो जाएगी. How will you attain nirvana? You can't. And again, he used to say that this should start at the early age. At the early age, your body is strong. You can actually go and sit for meditation for hours and hours. सोच के देखो कितना powerful है ये. Young student, people at the young age, or rather students of the young age should be put into spirituality. Body fit है, flexible है, healthy है, they will be able to sit for meditations आराम से. 50-60 साल में रिटायर होने के बाद, 60 साल के बाद आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, आपकी कमर सीधी नहीं है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी हैं. अब आपको बोला जाए मेडिटेशन में बैठो, एक पद्मासन में बैठो, नहीं बैठ सकते, पद्मासन लगेगा ही नहीं. 1 घंटा तो दूर की बात है, 5 मिनट नहीं बैठ सकते. तब तक बीमारियां भी आ गई हैं, तो आप डॉक्टर के पास भाग रहे हैं. So if your body is not fit, you cannot go further on the spiritual journey. How many of us agree with that? तो spirituality के लिए right time क्या है? Of course, the moment you are awake, but then as early as possible, not as late as possible. लोग कहते हैं पहले मैं पैसे कमा लूँ, उसके बाद मैं फैमिली देख लूँ, उसके बाद ये कर लूँ, सब कुछ हो गया, अब स्पिरिचुअलिटी में होगा. अब आपकी उम्र 60 साल की हो चुकी है. Now you are not fit enough to do anything physically. How will you sit for meditation for 10 hours? चलो 10 hours छोड़ो, 1 घंटा छोड़ो, 15 मिनट बैठ के दिखा दो मेरे को, अगर कोई 60 साल की उम्र में शुरू कर रहा है तो. And I do yoga every day in the morning. And people ask me, भाई you are doing so. कभी कभी कोई आ जाते हैं साथ में करने के लिए, right? So they keep asking. मैं कहा I learned this when I was 30 years old. तब बॉडी हेल्दी था, फिट था, फ्लेक्सिबल था, सीख लिया, और वो बॉडी को आ गया करने. Now even if I leave it, do it once in a week, I can do it very well. But if somebody who is starting at this age cannot do it, obviously not possible नहीं है, right? So you have to understand, spirituality के लिए एज का वैसा कोई लिमिट नहीं है, but then as early as possible you start, better it is for you. Correct? Okay, so we have covered most of the wisdom part for today. Let's have some sharings now. कौन बोलना चाहेंगे? Yes, Mani ji, welcome. If you want to ask something, if you want to share something, please go ahead. Simi ji, welcome. Yes. जिन्होंने I just वीडियो ऑन wanted किया to है, understand कि हाँ. ये इतना difficult क्यों होता है? Path of spirituality is हमारी डिफिकल्ट जो नहीं है, practical life है, डिफिकल्ट नहीं है. practical life. people are not guided right. I would say they don't get the right guidance. क्या मुश्किल है Actually, this बताइए. guidance should start from the schooling itself. अगर हमें स्कूल में शुड बच्चों की को बात ही छोड़ दीजिए. ये शुरू स्पिरिचुअलिटी में शुड कुछ नहीं होता. स्पिरिचुअलिटी तब होती है when you are awake. As long as you are sleepwalking, nothing is going to work for you. जिस दिन आपको आंखें खुल गई आपकी, आप सीकर बन गए, then you should be very very careful about your spiritual journey, and you have to devote some specific time for your spirituality. That is important. It is not tough. टफ किसने कह दिया? टफ बिल्कुल नहीं है. इट इज योर नेचर. ये आपका नेचुरल सेल्फ है. आपको बोले प्राणायाम मुश्किल है, प्राणायाम आप ब्रीदिंग तो कर रहे हैं ना, आप चाहो या ना चाहो यू आर ब्रीदिंग. तो प्राणायाम तो कर ही रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से करना है बस. शरीर को हिला रहे हो आप, बिल्कुल हिला रहे हो, तो थोड़ा सा प्लान्ड तरीके से आसन में बैठ के शरीर को थोड़ा सा आपको फिट फ्लेक्सिबल बनाना है. करेक्ट? So it is not tough at all. Spirituality is not tough. There are as many marks as you can think of. आप कर्म योग में जा सकते हो, राज योग में जा सकते हो, ध्यान योग कर सकते हो, ज्ञान योग ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो करो. भक्ति योग है, भक्ति योग तो बहुत सिंपल है, राइट? बट आपके कर्म जैसे जैसे कटेंगे वैसे वैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी. So you have to be very very awake and alert on your spiritual journey. That is important. मैं Yes. बोलूं? हाँ जी बोलो. हाँ जी सर. सर मेरा इसमें सोचना ये है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कि काफी ये होता है कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है. इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिजायर्स होनी चाहिए पहले.
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब तक डिजायर नहीं आएगी तो हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं हम चल ही नहीं सकते। जब इच्छा आ जाएगी कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी करनी है तो फिर अपने आप फिर देर नहीं लगेगी। फिर राइट। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डिजायर्स नहीं आती, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजायर कैसे आएगी? डिजायर आएगी कि जब आपको ये पता होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी से मिलेगा क्या, करेक्ट। है ना। अनलेस अनटिल वो स्पिरिचुअल जर्नी से क्या मिलेगा, ये बड़ा क्लियर है। जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी का जो रास्ता अपनाया है उनको पीस और हैप्पीनेस और आनंद ब्लिस मिलता है। तो ये बात मतलब कि जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनकी बात को आपको मानना पड़ेगा। और एक बारी जब ये पीस, क्योंकि हर एक को पीस हैप्पीनेस चाहिए, एवरीबॉडी वांट्स, तो वह जब वो चाहेगा तो वो पीस हैप्पीनेस के लिए फिर स्पिरिचुअल जर्नी चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी ये डिजायर आएगी अंदर तो फिर अपने आप रास्ते निकल जाएंगे। वेरी गुड, बहुत कोई बढ़िया। रास्ते मुश्किल नहीं है। Very good. Let's acknowledge Anirudh ji. And that reminds me of a statement which बुद्ध had said. जब बुद्ध से पूछा गया कि आपने जब ध्यान किया और आपने ज्ञान लिया तो आपको क्या मिला? कहते मुझे मिला कुछ नहीं, मैंने पर बहुत कुछ खोया। मैंने अहंकार खोया, मैंने गुस्सा खोया, मैंने दुख खोया, मोह खोया। तो ही लिस्टेड आउट द होल थिंग, ऑल द नेगेटिविटीज। कहते ये सब मैंने खो दिए, तो मेरे को मिला कुछ नहीं, पर मैंने ये सब खो दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। And that answer was so profound that the other person had no further questions. So if you are having काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, and if you want to give that up, the only way is spirituality. The only way is meditation and ध्यान और ज्ञान। बुद्ध की लैंग्वेज में दो ही चीजें हैं। और अगर ध्यान और ज्ञान नहीं आ रहा है तो वापस जाओ और अपनी लाइफ को सही शीलाचार में लाओ। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, that is what vipassana is all about, right? 3 steps. शील, we know, moral ethical conduct. समाधि is comes after meditation, तो ध्यान और समाधि, और उसके बाद प्रज्ञा या ज्ञान, that leads to the nirvana. So his teachings are very simple. Only thing is you have to be committed for it. If you're just interested, it won't work. You have to be really committed for it, and you have to take out time for that will help you to move on the physical world also in a very very powerful way. आपको सही ढंग से अगर जॉब करनी है, माइंड को स्टेबल रखना है, माइंड को पावरफुल बनाना है, माइंड को पॉजिटिव बनाना है, ऑल दैट कैन हैपन विद द स्पिरिचुअल पार्ट. यस, वेरी गुड अनुज जी, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ व्हाट आई कुड शेयर. एक देयर इज वन क्वेरी। अभी आपने एक बात, ये जो मैंने सुना स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बोला, अवे फ्रॉम द व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं उनसे हम अपने आप को दूर करना है, उन चीजों से, यही दूर, कहा ना? हाँ, दूर नहीं करना है, बेसिकली आई वुड से अवॉइड करना है, मेंटल डिटैचमेंट. हाँ, डिटैचमेंट, अवॉइड बाहर की करना दुनिया, है। क्योंकि आपको दिख क्या रहा है, बाहर की दुनिया दिख रही है, तो हाँ बाहर जी। की दुनिया में कोई मोह नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना है, ना राग, ना द्वेष, ना मोह, ये हाँ, 3 वो तो चीजें बोलते अटैचमेंट हैं. नहीं करनी है। जो जैसे आपने जो एक होता है कि कोई भी चीज जो बाहर दिखाई दे रही है उसको अवॉइड करना है ना। तो अवॉइड ऐसा कर सकते हो तो आपने, करो, हाँ जी, अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ऐसा मेन थिंग इज दैट यू शुड नॉट बी अटैच्ड. हाँ नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है, अटैच तो नहीं होना चाहिए, परंतु ये क्या है कि कोई भी चीज हम देखते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमने कोई नदी देखी उसको अवॉइड करो, कोई माउंटेन देखा उसको अवॉइड करो, इसका मतलब ये है? नहीं, इसका मतलब ये है कि माउंटेन को देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, मॉर्निंग राइज सनराइज देख रहे हो आप, पर वो आपको ध्यान रहना चाहिए ये मेरा नहीं है. आप एंजॉय द ब्यूटी, एंजॉय द मोमेंट एंड मूव ऑन. अब मेरा मेरा मेरी क्वेरी ये है कि अगर सनराइज देख रहे हैं वो लगना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हम ये कह लेंगे कि ये मेरा है तो उसमें बुराई क्या है? मेरा है से अटैचमेंट आ जाती है, इसलिए ध्यान रखना, और कुछ नहीं. नहीं, अटैच नहीं करना, अटैचमेंट इज अलग इशू है। हमें मेरा है, परंतु मेरा होते हुए हमें जो गॉड है, जो डिवाइन है, जिसको भी हम मानते हैं, उसकी गाइडेंस में चलना है। सर, मैं अभी उसकी गॉड की बात गाइडेंस नहीं में करूंगा, चलना ज्यादा क्योंकि जरूरी है। हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गॉड की बात नहीं होती है. सो वी चलो, विल स्टिक टू नथिंगनेस, कोई है ना. भी जो है जिसको आप मानते हो, इनर पावर को मान लो, है जो हाँ, भी पावर है, कोई जो अपनी मेडिटेशन पावर है, इनर एनर्जी है, तो अगर उससे हम ये इन्वॉल्व हो जाएं उसमें और उसकी उसकी गाइडेंस में चलें, तो मतलब कि छोड़ने से क्या होता है कि
आप अटैचमेंट मत करो। अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि किसी के साथ लगाव करना, उसमें दुखी होना, वो नहीं कह रहा हूँ, परंतु हर चीज को अपना मान के चलो और उसको गॉड, उसको जो भी डिवाइन है या इनर पावर है, उसकी 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 गाइडेंस में, उसके कनेक्शन में चलो। तो मेरे ख्याल में वो रास्ता थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल होगा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सही प्रोसेस है वो। आपको हर जगह पे अगर आप बोलते हो कि भगवान जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, चाहे वो पहाड़ हो या नदी हो या इंसान हो या कोई जीव हो, तो ऑब्वियसली आप जीव हत्या हाँ नहीं जी। करोगे, तो कंपैशन करुणा आ जाएगी हाँ, आपके तो अंदर। जब हम सब जगह भगवान को मानते हैं तो हम उनको छोड़ेंगे कोई, हमें उनको अपनाना है, अपने अंदर लेना है, हर चीज को अपने अंदर लेना है। तभी तो हम अपना उसमें डिवाइन को देखेंगे। हाँ, आप जिस मर्जी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको बस आपको ये थॉट लाना है कि जो डिवाइन पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वही डिवाइन मुझे भी चला रहा है। यस, यस, So दैट we इज अ are all फैक्ट। connected. So यस, we are all connected to each other. We are not attached to each other, but we are connected to each other. वी आर कनेक्टेड। अटैच से तो प्रॉब्लम आ जाएगी सर। अटैच से मोह माया बढ़ जाती है तो नहीं, डिल्यूजन वो तो राग फिर द्वेष शुरू हो जाएगा। वो तो तो स्ट्रिक्टली अटैचमेंट को ही छोड़ना है, बिकॉज सारे दुखों का कारण अटैचमेंट है। अटैचमेंट को छोड़ना, कनेक्टेड रहो। कनेक्टेड रहो, कैसे कनेक्टेड रहोगे? जब आपको ये थॉट आ जाएगा कि जो डिवाइन पूरे ब्रह्मांड में है वही डिवाइन मेरे अंदर भी, आत्मा के रूप में मेरे अंदर। सो दैट गिव्स यू द वेरी गुड कनेक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेट्स एक्नॉलेज अनुराग जी, बहुत बढ़िया है। यस, मनी जी, यू वांट टू शेयर समथिंग और यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज गो अहेड। गीता जी वेलकम, कुछ बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान पार्ट इज ओवर, वी आर जस्ट डूइंग द समराइजेशन नाउ। एनीबडी हु वांट्स टू शेयर व्हाट इज ओपनिंग अप, anything that is opening up, anything that you want to ask? आज कोई फेस्टिवल है क्या? पीपल आर, जो रेगुलर हैं हमारे वो भी नहीं आए आज। पीपल सीम टू बी बिजी टुडे। वेलकम वेलकम गीता जी। Welcome, नमस्कार sir. जी। Thank एनीथिंग you यू so वांट टू much. शेयर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? I was thinking, like, if you think about all these philosophies and spiritual stuff, it's all going within, looking within. And if you tell me that I have this regard, versus if I discover that this is what I am not good at, like, for example, I'm selfish, I am egoistic, or whatever. If I look myself and I understand this is the vikar that I need to work on, I feel that would be the cleansing of the spirit thing, the soul, and maybe you move ahead. Because you said something like, बहुत सारे वेद और सबसे ज्ञान आएगा, knowledge आएगी, but I have not read much of all these books, but yes, I'm very open to learning and receiving things which I feel are simplistic enough for me to understand. And I think the best thing that I generally like doing is, before going to sleep, I do some introspection and I think about the entire day. How have I behaved with certain people? Was I egoistic? What was it that I was operating from? Was I being rude? Did I hurt someone? Or was I good? Or did I help someone without even thinking of helping? So if you work on yourself, I think that is the best thing that can happen. Because then I think you don't need someone else to tell you that you are proud or you're jealous or egoistic. So I feel that अपनी लेयर्स प्याज की तरह से खुद ही खोलते जाओ तो सिंपल हो जाएगी लाइफ। Yes, yes, you're absolutely right. Very good. Let's acknowledge Gita ji. थैंक यू That सर। is actually the another step that you can add. Of course, it is not given in the Buddhism teachings, but you can definitely add swadhyaya, introspection, very, very powerful. But once you see what is the vikar, the process of cleansing that is this only. That's what he says. है ना? यस जैसे आपको दिख जाएगा कि आपके अंदर क्रोध का विकार है, तो फिर आपको वो ध्यान से हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। So then you cleanse the chit, and that will give you with the wisdom, and that will move you forward on the journey. है ना? So first step is swadhyaya, second step is cleansing. Absolutely right. Very good. बहुत बढ़िया. थैंक Let's यू सर। acknowledge. Yeah. Thank you. Yes. Anybody else? Gunjan, you raise your hand. Yeah, go ahead.
I'm very much inspired by Geeta ji, what she said. मुझे DHV में आने से पहले ऐसे लगता था कि बस ये 3D वर्ल्ड ही है, हमने अपने कर्म करने हैं एंड बस अपना ड्यूटीज निभानी है एंड we'll move on to the next birth. तो आई वॉज गेटिंग नॉलेज क्वाइट अ लॉट. मैं एक प्रोफेशनली एक मॉडल थी और एक फैशन डिजाइनर थी, बट आई वॉज टू मच इनटू 3D वर्ल्ड. बट डिवाइन के साथ कनेक्शन खत्म हो गया था द मोमेंट आई जॉइंड DHV एंड मैंने वेदांता विजडम का ज्ञान लेना शुरू किया. एंड तब मुझे पता चलना शुरू हुआ, ओके, there is some superpower who is also taking care of us. And इतना भी अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है. थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर ले, रुक जा एंड थम जा. एंड मुझे बहुत कुछ मिला. मुझे एक ऐसे गुरु मिले हैं जो मेरी हर चीज लेते हैं, हर गुस्सा. लाइक हर रोज लड़ाई होती है, हर रोज ऑलमोस्ट मैं अपना गुस्सा निकालती हूँ अपने सर पे. एंड कभी मैं DHV छोड़ देती हूँ, कभी फिर मैं आ जाती हूँ. एंड मुझे बहुत कुछ मिला है. एंड हर बार मेरे को ये भी बोलते हैं, मेरा एक दिमाग है लॉजिकल माइंड जो कहता है छोड़ दे, DHV बेकार है बिल्कुल. एंड देन देयर इज अनदर माइंड विच सेज जिंदगी तो चेंज हुई है ना, तो क्यों छोड़ना है DHV, पागल हूँ क्या. तो फिर आ जाती हूँ. आई एम सॉरी, मैं बहुत सिंपल हूँ एंड मेरे वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, बट मुझे बहुत कुछ मिला है DHV से. आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफul. Thank you. Let's acknowledge Gunjan. Very good. And I want to Yes. come back in my Wednesday group. It's my baby. Welcome. All right. Very good. Let's acknowledge. Great. So you have to be very, very सजग और सचेत बोलते हैं, है ना. You have to be fully aware and fully alert in your spiritual journey. That is what meditation will actually give you. तो जब आप सजग होते हैं और सचेत होते हैं, ऑब्वियसली आप प्रसन्नचित हैं और शांतचित हैं. You are happy and you are peaceful and you are awake and you are alert. That is the quality of meditation that will give you your life. तो आप अपनी लाइफ में ही पूरा सजग और सचेत रहेंगे and you will be very, very, you can say, conscious of what is inside you. अब अच्छा मेरे अंदर ईगो चल रहा है, वेरी गुड. सो आप रुक जाओगे, थम जाओगे, उसको छोड़ दोगे, रादर देन एक्टिंग बाय द एंगर और एक्टिंग बाय द हर्ट, है ना. So that part is very, very important, and that is what Gunjan, you are on the job right now. Good. So just observe and let it go. Observe and let it go. That is the path. And lifestyle से meditation आएगा, बड़ा सिंपल है. शील से ध्यान और ध्यान से ज्ञान, यही बड़ा सिंपल स्टेप है. और यही चीज विपासना And में सिखाते हैं. I would like to add one more thing. Sorry, sir, to interrupt you. I'm really sorry, Sanjeev sir So- and Amit also, It's okay. openly. Relax. No, it's okay, sir. Let me do it. मेरी आत्मा को शांति मिलेगी. Okay. Go मुझे ahead. शांति के लिए. Yeah, that's fine. They understand, so it Thank is okay. Fine. Relax. Thank you. Okay. Yeah. So you have to do that one-to-one. You don't have to do that here. That's perfect. Whatever you want to do, you have a one-to-one. Correct? All right. Yes. So what I was talking is when we talk of vipassana again, उसमें जो 3 steps बताए गए हैं वो भी क्या है? शील, समाधि, प्रज्ञा. It is exactly in the same line. शील, समाधि, प्रज्ञा means exactly what we are talking here is शील, and then we talk of ध्यान और समाधि, then we talk of प्रज्ञा और ज्ञान. So this is actually what is taught in the Vipassana centers also. How many of you have attended, by the way? Have you got an opportunity to attend Goenka ji's Vipassana session, 10 days program? किसी ने किया है? गीता जी, आप अभी भी म्यूट पे हैं. In case you want to. I have been wanting to, but somehow I've not been able to take out that sort of time right now. Maybe the time hasn't come, so I definitely would do that. Yeah, time It's will never okay. come. If you're committed, go ahead and do it. That's all I would say. Take Well, 10 sir, days of your somehow- life and you will get Well, your life back. This समय my God will want, I will do it. I definitely would. I Yes. am keen on it.
So plan it, be committed, and go ahead with it, because your spiritual journey will definitely get a booster dose if you're doing अभी any भी program like अभी Vipassana भी or anything. happening है, is it happening है भाटी में अभी भी ना वहीं पे? I don't know. I did it from Dhamma Sota, which is on the Gurgaon, Faridabad Gurgaon road. अच्छा, 40 there is one kilometers nearby. from 40 kilometers from Ballabgarh. That is where I went. There are many centers, so you can just check it on the website and do that, because that is the very closest way of how I could relate to the Buddhism, the Buddhist teachings. And it cleanses the chit in a big way. क्योंकि 10 दिन तक आप मौन में रहेंगे. And Sanjeev is not here, otherwise he would have loved to share his experience. He has done that 4 to 5 times. Yeah, I have done that once, but that experience was so profound for me that, you know, I could experience complete cleansing of the chit. तो 10 दिन में मौन में रहेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे, 14-15 hours meditation you are doing, and it is so empowering that once you come back, you are a different person. But you have to be committed for it, and you have to go for it. You know, so उसमें शील, समाधि, प्रज्ञा, that is all we talk about, and it's a wonderful, wonderful experience. Yes. I'll do it. Sir. Great. So now we are reaching the closing time. So what I will again mention one of the programs which we are starting from 18th, which is not a program actually. This is a big opportunity of ancestral healing, which is happening from 18th September, and it will go on till 2nd October when the Shraddh period is over, and then during the Navratri Puja from 2nd October to 12th October till Dashera. So this is a very, very special time. Very divine energies are there, and we are going to conduct the ancestral healing. Now, many people had a question, so I will just mention that so that everybody gets aware of it. The Purnima actually is on 17th, and it is starting from 11 a.m. and it goes up to 18 till 8 a.m. So many people are asking me कि आप 17 से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, 18 से क्यों शुरू करें? So you have to understand that ancestral healing actually happens in the kind of healing that we do happens in the morning in the Brahma Muhurt. अब ब्रह्म मुहूर्त में 17 को ड्यू नहीं होता है क्योंकि टाइम शुरू नहीं हुआ है, तो 11 बजे से शुरू होता है. तो हम 18th की मॉर्निंग से शुरू करेंगे ancestral healing, and then it will continue till the Dashera till 12th, and the final energies will be stabilized after the 12th. So that is the whole program. It is a wonderful, wonderful program. Many people have already enrolled. I have mentioned that in the post, as a post in the group. Yes, but then, yeah, if anybody is interested, you should do that. It's very, very powerful for cleansing your genetic karma. It gives a booster dose for your own success in the materialistic world as well as in the spiritual world, and definitely it helps your spiritual energy of the ancestors to go ahead in their own journey. Right? मेरे इसमें एक क्वेरी है कि ये जो आपने जेनेटिक कर्मा की बात किया है, हम ये कहते हैं कि बॉडी है, ये बाद में सोल में कन्वर्ट, तो सोल का कोई जेनेटिक कर्मा होता है? जेनेटिक होता है सोल में? सोल का जेनेटिक कर्मा नहीं होता है. सोल, हाँ जी, so you have to understand it this way. When a soul is taking a birth, जब उसका नहीं होता, हम तो बॉडी खत्म हो गई, बॉडी के बाद सोल जो है वो जो है जहां भी कहीं चली जाती है, हमें नहीं पता. ठीक है, तो फिर हमारे जीन्स तो यहीं रह गए ना, तो जीन्स तो साथ नहीं जीन्स गए, कहाँ तो रह जाएंगे सर? सोल के साथ बॉडी जाती है, subtle mind and soul goes to the next body. See, there are three parts. ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा. फिजिकल बॉडी है, माइंड बॉडी है जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर. ठीक है ना? तो ये होता है फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड द, यानी कि ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड द कॉजल बॉडी. करेक्ट? जब सोल शरीर छोड़ दे, आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिजिकल बॉडी गिर जाती है क्योंकि प्राणा शक्ति कम हो जाती है, बंद हो जाती है, बॉडी फिजिकल बॉडी चली जाती है, सटल बॉडी सोल के साथ मर्ज हो जाती है, एंड इट गोज टू फाइंड ए न्यू बॉडी. तो आपके जो भी संस्कार हैं, जो कुछ आपने इस जन्म में इकट्ठे किए, वो सब आत्मा के सोल बॉडी के साथ मिलके, यानी कि कॉजल बॉडी और सटल बॉडी मिलके अगली फिजिकल बॉडी में जाती है. तो आपका तो उसमें सारे कर्म जाते हैं आपके. पास्ट लाइफ कर्मा भी जाएंगे, प्रेजेंट कर्मा भी जाएंगे, जेनेटिक कर्मा भी जाएगा. आपका ये कहना है कि जो सोल है, जो हमारी सोल जाती है, तो सोल के साथ हमारे जो जीन है वो भी साथ में जाते हैं? बिल्कुल, जेनेटिक कर्मा जाएगा ना. जेनेटिक कर्मा जाएगा, जीन्स नहीं जाएंगे, जेनेटिक कर्मा जाएगा. उस जीन्स की वजह से जो कुछ कर्मा आपके साथ अटैच्ड हैं,
पास्ट लाइफ का कर्म कैसे जाता है, आगे बताइए। सर नहीं नहीं, मैं इसमें मेरा इसमें एक क्वेश्चन और आएगा कि जीन का स्पेस होता है, जो हमने पढ़ा है जीन का स्पेस होता है, जबकि हम ये कहते हैं कि जो डिवाइन है या सोल है वो स्पेसलेस है। तो सर समझिए हमारे बात को, बाद मैं ये नहीं में बोल रहा आपके हाथ हमारी बात जाएंगे। में जो भी बचेगा उसका स्पेस होता है, इसका मतलब स्पेस के लिए जीन्स तो हम नहीं मना जा करते रहे हैं। हैं सर, जेनेटिक कर्मा जा रहा है। मान लिया सर, जेनेटिक कर्मा का जेनेटिक्स का स्पेस तो होता है। जीन्स जीन्स जो होते हैं अच्छा ठीक है, डीएनए आप मेरे को मॉलिक्यूल बताइए होते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा कैसे जाता है, पास्ट लाइफ की भी स्पेस होती है। अगले जन्म में जाएंगे, आपके ये संस्कार जाएंगे ना अगले जन्म में, कैसे जाएंगे। नहीं नहीं, वही वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब हम सोल में हैं तो जीन्स तो नहीं जा सकते, या तो जीन्स का वो स्पेस में जाएंगे जीन, विदाउट फिजिकल स्पेस में कोई तो भी जीन जा चीज नहीं नहीं सकते। जाएगी, फिजिकल सब यहीं जल जाता है, ग्रॉस हाँ, बॉडी है। तो फिर तो जीन भी जल हाँ जाएंगे जीन्स क्योंकि वो भी जल गए। स्पेस में है। हाँ जीन्स हाँ, जल गए। तो वो तो नहीं जाएंगे फिर नहीं हमारे कर्मा। जाएंगे। हाँ जी, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन जेनेटिक कर्मा जाएगा। तो जेनेटिक कर्मा का भी स्पेस स्पेस होता है ना जी। नहीं होता है स्पेस, माइंड बॉडी में है, सबकॉन्शियस माइंड है। सोल एंड माइंड गोज टू द तो फिर नेक्स्ट हम बॉडी। जेनेटिक वर्ड यूज कर रहे हैं, जेनेटिक कर्मा यूज कर रहे हैं, वो उसको हम कहते हैं माइंड कर्मा कह सकते हैं। जेनेटिक अरे सर एक ही जेनेटिक का बात है मतलब ना, होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स, जीन्स। मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा, एटम्स मॉलिक्यूल सब यहाँ पे चले जाते हैं। आप बात को समझ नहीं रहे हैं, आप एक बात सर पे अटक गए हैं। मैं अनिरुद्ध जी मैं समझिए जेनेटिक बात का को। मतलब जो है जेनेटिक वर्ड होल्ड जो यूज कर रहे होल्ड हैं। होल्ड, आपको ज्यादा डाउट है, 1 to 1 बात कर लेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी माइंड बॉडी है, माइंड बॉडी में सारे संस्कार और आपके कर्मों का लेखा जोखा जाता है, माइंड बॉडी में जाता है। वॉट एवर गोज इज इन द माइंड बॉडी, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्मा हो, प्रेजेंट कर्मा हो या जेनेटिक कर्मा हो, ऑल कर्मास आर इंक्लूडेड इन द माइंड बॉडी। माइंड बॉडी अलॉन्ग विद द सोल बॉडी गोज टू द नेक्स्ट फिजिकल बॉडी, तब वो ट्रायून बीइंग कंप्लीट होता है, बॉडी माइंड एंड सोल। इज दैट क्लियर। सर ये मुझे क्लियर है, इसका मतलब ये बस मैं बस अभी इतना ही मानता हूँ रखेंगे, बाकी डिटेल्स में आप मेरे से अलग से बात करिए। कि सोल का, इसका मतलब जो भी जाता है सोल के साथ में उसका स्पेस है फिर। आप क्या स्पेस बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए, सोल एंड माइंड गोज टू द नेक्स्ट बॉडी, फिजिकल बॉडी विल बी लेफ्ट हियर, सोल एंड माइंड विल गो टू द नेक्स्ट बॉडी एंड टेक ए न्यू बर्थ। ओके, तब वो जीवा बनता है, ट्रायून बीइंग है। सिर्फ बॉडी गई है, नई बॉडी में जाएगा, बाकी सारे संस्कार वगैरह जो है वो वैसे के वैसे ही इंटैक्ट चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसे, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। करेक्ट। ओके, जस्ट गुंजन गो अहेड। सर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे पास इसके लिए। मैंने एक धर्मेंद्र की इंटरव्यू देखी थी, उसमें उसने कहा था कि जब धर्मेंद्र ने उसने इसमें उन्हें कह रहे थे कि करण जौहर ऐसे कर रहा है, नेपोटिज्म के ऊपर था। एंड वो कहता कि नेपोटिज्म क्या है, कहता जब बिजनेसमैन एक अपना बिजनेस छोड़कर मर कर अपने बेटे को देकर जाता है, तो क्या मैं अपनी एक्टिंग धर्म अपने बच्चों को नहीं दूंगा। तो सेम जो अपने हमारे पूर्वज हैं उनके कर्म वो हमें नहीं देकर गए हैं क्या, तो छोड़ो, वो ये देकर बहुत गए। ज्यादा डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, इट्स ओके इट्स ओके। या उनका पॉइंट कुछ और था, अनिरुद्ध जी का पॉइंट कुछ और है ना। So ओके let's not confuse further. That's okay. मेरा पॉइंट अलग था, ये नहीं था। हाँ वो अलग है। ओके ओके Yeah. ओके। Anybody else who has any questions? आलोक जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अशोक जी? सर पासपोर्ट कोच देखकर टेस्ट बंगाल लग रहा है। हाँ? अशोक जी, if you want to share something, you should share. Otherwise, you should go on mute. Huh? All right, we are already 5 minutes over time. Anybody else who has to say anything? और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? Right. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great day, enjoy a great week, and watch the recording again. If you have any kind of disconnect, connect with me 1-to-1 tomorrow. And we meet again next week with more of Gyan on meditation and Gyan, which means sadhana, samadhi and pragya. उसके ऊपर हम और बात करेंगे अगले हफ्ते. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Aham Brahmasmi. Thank Thank you, sir. you.